हेलो व्यूअर्स, जीके विद लेक्चरानी चैनल पर मैं हाजिर खिदमत हूँ एक नए अहम टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। जी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मीकोंग रिवर की। मीकोंग रिवर इज़ अ ट्रांसबाउंड्री रिवर इन ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। According to Encyclopedia Britannica, Mekong River passes through 6 countries: China, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, and Thailand. Do you know which river is the longest river in Asia? Yangtze River, also known as the Changyong in China, is the longest river of Asia and third longest river in the world. Other important rivers in China: River Li, Mekong River, Yangtze River, also known as the Changyong, Yellow River, Honghe, also spelled Huangho. Yellow River is also known as Sorrow of China. Important rivers in India: the Brahmaputra River. ये दरिया तिब्बत से निकलकर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से होता हुआ बांग्लादेश तक जाता है। Source of this river is Kailash ranges of Himalayas. Mouth: this river empties into Bay of Bengal. The Ganges River. The Ganges is the largest river in the India. The Krishna River. The Krishna River is a river in the Deccan Plateau. Source: the Krishna River rises from the Western Ghats near Jor village of Satara district of Maharashtra. Mouth: Bay of Bengal. Yamuna River System, Mahanadi River System, Indus River System. Longest river in the world is the Nile. जी हाँ व्यूअर्स, इजिप्ट में वाक़ रिवर नील दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। मिस्र के अलावा ये दरिया दर्ज झेल ममालिक में से गुजरता है। द रिवर नील passes through following 10 countries: Burundi, Tanzania, Rwanda, the Democratic Republic of the Congo, Kenya, Uganda, Sudan, Ethiopia, South Sudan, and Egypt. Its length is 6,650 kilometers. यूं बरे आज़म अफ्रीका और दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुल 10 ममालिक में से गुजरता है। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, दरियाए नील की लेंथ 6,650 किलोमीटर है। Zambezi River in Africa either cross or forms the boundaries of 6 countries: Angola, Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, and Mozambique. Fast facts about Congo River. It is second longest river of the African continent after the Nile. Congo is the only major river which crosses the equator twice. The Congo is the deepest river in the world. It is formerly known as Zaire River. Countries Congo River flows through: the Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, sometimes referred to as Congo Brazzaville, the nation's capital, to distinguish it from its large neighbor to the east, the Democratic Republic of the Congo, the Central African Republic, eastern Zambia, northern Angola, and parts of Cameroon and Tanzania. Following is the list of rivers that flow through Canada: Mackenzie River, the Churchill River, the Yukon River, the Peace River, the Ottawa River, the Skeena River. व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसके मेन रिवर्स दर्ज झेल हैं: द मिजोरी रिवर, द कोलंबिया रिवर. सोर्स ऑफ दिस रिवर इज़ ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा एंड इट एम्प्टीज इनटू द पैसिफिक ओशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं द कोलोराडो रिवर की, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की 7 रियासतों में से गुजरता है। द रियो ग्रांड रिवर और द यूकॉन रिवर भी अमेरिका में वाक़ हैं। व्यूअर्स, यूकॉन रिवर का सोर्स कनाडा में है, तो डेफिनेटली इसका कुछ हिस्सा कनाडा में भी वाक़ है। रॉय रिवर दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट दरिया है, जो कि अमेरिका में वाक़ है। देन देयर इज़ मिसिसिपी रिवर, जो कि लेक इटास्का से निकलता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ख़त्म होता है। व्यूअर्स, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट नोट कर लें, अपने नाम के बरक्स कैनेडियन रिवर यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। अमेज़न रिवर बर आज़म साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया है। ये अपने वॉल्यूम, बेसिन एरिया और ख़ुसूसन इकोसिस्टम के हिसाब से बड़ा दरिया गिरदाना जाता है। अनदर रिवर ऑफ USA इज़ रेड रिवर. द अमेज़न रिवर पासिस थ्रू Peru, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador,
and Brazil. Amazon River empties into the Atlantic Ocean at the equator. The São Francisco River flows in which country? Brazil, USA, Canada, Ecuador. The correct option is Brazil. Paraguay River passes through which country? Paraguay, Brazil, Argentina, Bolivia, all of these. The correct answer is all of these. Volga River is the largest river of Europe. It is situated in Russia. It originates in the Valdai Hills and it empties into the Caspian Sea. ओब रिवर सेंट्रल रशिया में वाक़ है। ये दरिया अल्ताई माउंटेन साइबेरिया से निकलता है एंड इट एम्प्टीज़ इनटू द कैरा सी ऑफ द आर्कटिक ओशन। इसके अलावा अमर रिवर, डॉन रिवर, लीना रिवर, येनिसाई रिवर और यूराल रिवर भी रशिया में वाक़ हैं। यूराल रिवर रशिया के अलावा कज़ाकिस्तान में भी बहता है। सिरदारिया फ्लोज इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑफ उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान। अमुदारिया सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। दिस रिवर इज़ हिस्टोरिकली नोन एज द ऑक्सस रिवर। ये दरिया अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में से गुज़रता है। डन्यूब रिवर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप। यह दरिया जर्मनी में वाक़ है। इसके अलावा ये रिवर ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन एंड मोल्दोवा में से गुज़रता है। सेन रिवर फ्रांस में वाक़ है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं टूर द फ्रांस बाइसिकल रेस की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो कि 1903 में फ्रांस में स्टार्ट हुई। टूर द फ्रांस 2023 वाज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई इन स्पेन। यह टाइटल डेनमार्क के साइकिलिस्ट जोनस विंजगार्ड ने अपने नाम किया। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइन रिवर और रोन रिवर की। रोन इज़ लोकेटेड मेनली इन फ्रांस, जबकि रोन रिवर स्विट्ज़रलैंड से शुरू होता है और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस से होता हुआ नीदरलैंड्स में जाके ख़त्म होता है। द रिवर मर्जी और रिवर थेम्स यूके में वाक़ हैं। व्यूअर्स, डू यू नो वेयर द जॉर्डन रिवर इज़ सिचुएटेड? इसराइल, जॉर्डन, ओमान, नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज़ इसराइल। This river empties into the Dead Sea. Dead Sea is the lowest point on land. The longest river in Australia continent is Murray River. व्यूअर्स, अब आपको एक दिलचस्प फैक्ट से आगाह करती हूँ। यूके और कनाडा में एक ही नाम के दो दरिया पाए जाते हैं। द नेम इज़ रिवर सेवर्न। ऑरेंज रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। यूफ्रेटिस रिवर इन द मिडल ईस्ट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ वेस्ट एशिया। It rises in Turkey and flows southeast across Syria. It then flows through western and central Iraq to unite with the Tigris River and continues as Shatt al-Arab to the Persian Gulf. Following is the list of rivers that flows in Afghanistan: Amu River, Helmand River, Kabul River. This river joins the Indus River at Attock in Pakistan. Following is the list of rivers flowing in Iran: Aras River, करून रिवर। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जनरल नॉलेज और सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।